Hi my YouTube family, welcome back to my channel. My name is Sonam Rajput and I make videos on makeup, travel, beauty, lifestyle and much more. So yeah, in this video I'm gonna show you a tutorial of this eye makeup look of mine, and together we are going to create this look. And yeah, without wasting any more time, let's get into the video. अपना base कर रखा है already and I have prepped my eyelids as well with the concealer and set it up with the compact powder. Since my eyelids are already prepped, मैं सिर्फ अच्छे से दोबारा से टैप कर रही हूँ ताकि जो भी creases पड़ी हुई हैं, correct those lines, the creases I mean. I'm gonna use this eyebrow pencil. This is from Swiss Beauty. Brow definer इसी को ही मैं use करूँगी to create that outer V और smoky का eyeliner. इसी को अंदर की तरफ भी smudge out करूँगी थोड़ा सा स्मोक आउट सा इफेक्ट देने के लिए. I'll do the same on another eye as well. Now I am applying the black eyeshadow on the pencil. यहाँ पे मैंने अभी आउटर वी बनाया था, उसी के ऊपर डैप डैप करके थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी अंदर की तरफ को. I am going to take this black shade on this pencil brush and will try to create a cut crease, half cut crease kind of. Like I am, it is very difficult to explain, but just try to do it like I am doing in the video. Make sure to blend everything seamlessly. बहुत ही ध्यान से काम करना है. Now I'm blending that black color with the gray shade to create that ombre or a gradient kind of a color. बहुत ही हल्के हाथ से blend करूँगी. Taking a slightly fluffy brush than the earlier one and taking that gray shade again and blending everything for that seamless look. Don't worry, अभी कुछ अजीब सा लग रहा होगा, but it will going to look good like this one. अभी हमें कट crease create करेंगे. इसके बाद I'm going to use the concealer with this angular brush. We'll try to create a cut crease. Now cut crease आपको अपने जो eye fold है, जहाँ पे भी आपका ये fold पड़ रहा है, this is the crease. You have to cut your crease above than your natural crease to make your eyes look bigger. तो अपने जो मेरा fold है उससे थोड़ा सा बहुत ही sharp सा cut crease create करेंगे. अब वो क्योंकि नीचे ब्लैक कलर था ना, तो मेरा कंसीलर भी पूरा ग्रे पड़ चुका है. आई एम ब्लेंडिंग द कंसीलर विद द ब्लैक आई शेडो टू क्रिएट दैट ऑम्ब्रे इफेक्ट. काफ़ी अच्छा लग रहा है. टेकिंग दिस ग्लिटर पैलेट फ्रॉम मार्स एंड टेकिंग दिस गोल्डन शेड राइट ओवर हियर. आई एम गोइंग टू अप्लाई इट विद द हेल्प ऑफ काफ़ी अच्छे ग्लिटर्स हैं. इसको हम फिंगर्स और ब्रश दोनों की हेल्प से लगा सकते हैं. एंड आई एम गोइंग टू press it on the concealer. With these two fluffy brushes, I'm going to blend these harsh lines with this gray shade. Now this is looking absolutely stunning. And now we're gonna end this eye look with the lashes and eyeliner. मैंने लैशेज अप्लाई कर लिया है. दिस इज़ द फाइनल लुक. आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस लुक. कलर्स थोड़ा सा चेंज लग रहे हैं दोनों, क्योंकि इस साइड मेरी लाइट्स हैं एंड दैट इज़ वाई द कलर्स आर लुकिंग डिफरेंट लिटिल बिट, बट दे आर एब्सोल्युटली सेम. But yeah, this is the final look. I hope you guys enjoyed it. I am loving this look, and yeah, I hope you guys enjoyed this tutorial as well. And if you really did, then do not forget to like, share, subscribe to my channel. Until then, goodbye.